बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन एमसीक्यूज़ जो पेडागॉजी एमसीक्यूज़ हैं और जो ऑल टीचिंग जॉब्स लेक्चरर एसएसटी टीटीटी ईएसटी सब टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये जो नेक्स्ट वीक में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्लासरूम मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट का फैक्टर है। इन जवाब है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसमें फैक्टर्स हैं। नंबर 1 पे जो है वो डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बिहेवियर इन क्लासरूम, नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ द टीचर विद स्टूडेंट्स, एंड जो थर्ड पे है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें करेक्ट बनते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है। Next question है the technique of classroom management where the teacher punishes negative behaviors by removing an unruly student from the rest of the class is called। और जवाब बनता है इसका ऑप्शन सी, the time out technique। Next question है the satiation technique of classroom management is technique where instead of punishing negative behavior the teacher might decide to actually ditch the negative behavior। Incorrect answer है इसका ऑप्शन ए, to encourage the negative behavior। Next question है the extension technique of the classroom management is a technique where a teacher ditch any negative behavior। इन जवाब है इसका ऑप्शन बी, to ignore any negative behavior। Next question है when students are asked to leave the classroom to observe the events, organism and object in their natural surroundings, the teacher is actually using this strategy to teach them। इन जवाब है इसका ऑप्शन ए, field observation। Next question, the one way to maximize teaching time, shorten delays due to transition and focus on student behavior is used to establish dash in classroom। इन जवाब है इसका ऑप्शन सी, routine। Next question, a dash is any activity that occur outside the classroom for the purpose of providing the hands-on experience with objects or the people that only occur in certain places। इन जवाब है इसका ऑप्शन डी, फील्ड ट्रिप, जहाँ पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व्स 2 और मोर स्टूडेंट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन ए, कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द टीचर इज स्टेटिंग द इंफॉर्मेशन टू शो बेसिक प्रिंसिपल इन द क्लासरूम ही इज़ एक्चुअली। तो जवाब है इसका ऑप्शन सी, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन टू मेक द क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव एवरी टीचर शुड डिस्कस विद कोलीग्स। एंड जो करेक्ट ऑप्शन इसका बनता है वो है ऑप्शन ए, एनालाइज द रिस्पॉन्सेज ऑफ अ स्टूडेंट। क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ द क्लासरूम टीचिंग इज अ डैश। इनकरेक्ट आंसर है इसका टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है द एक्सटिंक्शन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज टेक्निक वेयर टीचर डैश एनी नेगेटिव बिहेवियर। इन जवाब है इसका ऑप्शन बी, टू इग्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूज़ ऑफ फिजिकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो जवाब है इसका ऑप्शन डी, द कॉर्पोरल पनिशमेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन टेक्निक फॉर मैनेजिंग द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर विदाउट कॉजिंग द एम्बेरसमेंट टू स्टूडेंट। इन जवाब बनता है इसका ऑप्शन सी, यूजिंग द प्राइवेट सिग्नल्स और क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पेक्ट योर्स क्लासमेट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ डिश। इन जवाब बनता है इसका ऑप्शन डी, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्वेश्चन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ टाइम आउट इन क्लासरूम डिसिप्लिन। इन जवाब है इसका ऑप्शन बी, टू रिमूव अ स्टूडेंट फ्रॉम अ सिचुएशन टू calm down and reflect। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासरूम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ सेफ एंड प्रोडक्टिव डिश। एंड आंसर है इसका ऑप्शन ए, लर्निंग, to creating and maintaining a safe and productive learning। Question है classroom management involve a variety of dash, positive behavior and technique that teacher use to promote। इन जवाब बनता है इसका ऑप्शन ए, strategies। Next question, the classroom management engage student in learning and foster the sense of community and mutual respect among a dash। इन जवाब है इसका ऑप्शन सी, among a students। Next question, establishing reward and building relationship is a principle of dash। इन जवाब है इसका ऑप्शन ए, द क्लासरूम मैनेजमेंट।
Next question, a classroom management technique where a teacher punishes negative behavior by removing an unruly student from the rest of the class is called. And जवाब है इसका ऑप्शन सी, टाइम आउट टेक्निक। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्वेश्चन है which of the following should be used to decrease the minor inappropriate behavior by students? एंड जवाब बनता है इसका ऑप्शन सी, ignorance। Next question, which of the following should be used to increase the correct responses and appropriate behavior by a student? तो जवाब है इसका ऑप्शन ए, by a praise। क्वेश्चन है which of the following is an important element of classroom management? important element जो है वो है ऑप्शन सी, classroom rules। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary purpose of the classroom discipline? एंड जो प्राइमरी पर्पस है वो है ऑप्शन बी, टू मेंटेन द ऑर्डर फॉर इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following strategies is most effective for managing the misbehavior in the classroom? और इसमें जो सूटेबल या करेक्ट जवाब बनता है वो है ऑप्शन सी, द पॉजिटिव reinforcement फॉर अ गुड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर्स थ्योरी विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन? इन जवाब है इसका ऑप्शन ए, द पॉजिटिव reinforcement। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ द मिसबिहेवियर इन अ क्लासरूम? एंड जो कॉमन कॉज बनता है वो है स्टूडेंट डिसइंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर अवॉइड व्हेन अ मैनेजिंग क्लासरूम डिसिप्लिन? तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए? तो फेवरेटिज्म, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट इज मोस्ट कंडुसिव टू लर्निंग? जवाब है इसका ऑप्शन ए, और जवाब है इसका ऑप्शन बी, अ फ्लेक्सिबल एंड इनकरेजिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोएक्टिव अप्रोच टू क्लासरूम मैनेजमेंट? एंड जवाब है इसका ऑप्शन बी, सेटिंग अप क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर। मतलब स्टार्ट से ही क्लियर रूल्स एंड होने चाहिए हर स्कूल में। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वन ऑफ द की रोल्स ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट? जवाब है इसका टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट बिहेवियर? कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें बेहतर है जो स्टूडेंट की जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करता है? तो जवाब है ऑप्शन बी, इनकरेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट।